the Wilsonian School, and that is idealism and the quest for a better world. So, this school of thought as a US foreign policy was propounded by Woodrow Wilson. He was 28th President of the United States and the namesake for the Wilsonian School. ठीक है, इसने जो फेमस अपने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे इन 1918, जो कि आफ्टर दैट लेड the basis for the ending of the World War I. जो it was aimed at promoting world peace. He was a leading advocate of the League of Nations as well, that helped enable the international community to avoid wars and end the hostile aggression. तो इसकी जो स्कूल ऑफ थॉट थी, इट टॉक्ड अबाउट मोरालिटी एंड अमेरिकन इंटरेस्ट. इट टॉक्ड अबाउट अ पीसफुल वर्ल्ड दैट वाज फाउंडेड ऑन द रूल ऑफ लॉ. दे टॉक अबाउट promoting democracy and human rights. They also talk about collective security and self-determination. Wilsonian School of Thought जो है, they basically take a religious view of American values, और वो ये कहते हैं कि they should spread its values throughout the world. ठीक है, और American democratic and social values जो है world wide होनी चाहिए. ठीक है, they sought to promote these American interests. अकॉर्डिंग टू विल्सोनियन स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज जो है ये ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज दे टेंड टू प्रॉस्पर मोर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स. ठीक है, सक्सेसफुल कैपिटलिज्म जो है इट डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ लॉ. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप फेयर एंड इफेक्टिव लीगल सिस्टम. वो कहते हैं कि विल्सोनियन स्कूल जो है इट इज़ अ यूनिवर्सल स्कूल ऑफ थॉट एंड नॉट अ पर्टिकुलर आइडियल थॉट. ठीक है, बिकॉज वो कहते हैं कि देयर इज़ नो रेसेस, इंडिविजुअल्स, कंट्रीज, कल्चर इन द विल्सोनियन प्रिंसिपल एज दे वांट अ वर्ल्ड ऑफ पीसफुल डेमोक्रेसीज. ठीक है, हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना. सो स्टैंडिंग अप फॉर अमेरिकन वैल्यूज़ इन फॉरेन पॉलिसी, वो कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट वे टू डिफेंड अमेरिकन इंटरेस्ट्स. विल्सोनियन स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसीज जो है दे मेक वर्ल्ड बेटर एंड मोर रिलायबल बिकॉज मोनार्कीज एंड टायरनीज जो हैं दे आर नॉट गुड बिकॉज दे गो अगेंस्ट द इनोसेंट पीपल एंड दिस लीड्स टू वायलेंस एंड होलोकॉस्ट. सो दे आर अगेंस्ट of all of these principles and values. So the prominent figure associated with this school of thought, I have told you before, Woodrow Wilson, वो तो namesake of the Wilsonian School है. He was 28th President of the United States. Or the second one is Franklin D. Roosevelt. So he was 32nd, 32 President of the United States. And a distinct cousin of the Theodore Roosevelt as well. मैं पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ. Theodore Roosevelt, he was a prominent figure in the Hamiltonian School of Thought. और जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट हैं, ही लेड द यूएस थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर II. इसने इनिशिएट की थी न्यू डील एंड लैंड लीज प्रोग्राम्स. He also proposed the four freedoms and the Atlantic Charter, and he also supported the creation of the United Nations. जो UN है उसकी creation में, उसकी establishment में Franklin D. Roosevelt, he was the main lead. फिर the third one is Sir Harry Truman. So he was 33 President of the US, and he was also the successor of Franklin D. Roosevelt. इसने जो decisions बनाए थे to use atomic bomb against Japan, उसने launch किया था Truman Doctrine and the Marshall Plan to contain communism and to counter Soviet Union का जो expansion है उसको counter किया जाए. और different programs initiate किए थे, economic programs, infrastructure programs for the recovery of the Europe. He also established NATO and supported the creation of Israel. So you know he is very important in the history, in the world history. ठीक है, एक तो इसने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जापान के ऊपर गिरवाया था. ठीक है, फिर ट्रूमन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान को इनिशिएट किया था, which was aimed at containing communism and over countering the spread of Soviet Union का influence. रिकवरी के लिए, रिकवरी ऑफ द यूरोप के लिए प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, हर तरह का. एंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड नाटो, और उसने सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इजराइल. द फोर्थ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद दिस स्कूल ऑफ थॉट is John F. Kennedy. So he was 35th President of the United States and the youngest elected to the office. इसका जो है, he confronted the Cuban Missile Crisis and initiated the Alliance for Progress and Peace Corps.
इसने कुछ प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया था, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट, स्पेस प्रोग्राम्स। इसने एक स्पीच डिलीवर की थी, फेमस स्पीच थी, जो कि थी ICH बिन इन बर्लिन स्पीच। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द विल्सोनियन स्कूल ऑफ थॉट। उनका बेसिक प्रिंसिपल या पॉलिसी यही थी, टू डेवलप मॉरलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, पीसफुल प्लानट होना चाहिए, मॉरल एब्लिगेशन होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, ये वाली